Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Learning. I am Mazhar Abid Jalbani to teach you English. Today we will discuss about English grammar and parts of speech as well. So first of all, we are going to discuss parts of speech, their names and their symbols. The first and foremost question is how many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. नंबर फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन जिसकी सिंबल एन है. सेकंड नंबर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन जिसकी सिंबल पी आर ओ है. थर्ड वन इज एडजेक्टिव विच इज जनरेटेड बाय सिंबल ए डी जे. फोर्थ वर्ब विच इज जनरेटेड बाय वी एंड फिफ्थ वन इज एडवर्ब विच इज जनरेटेड बाय ए डी वी. सिक्स्थ वन इज preposition which is generated by PREP and seventh part is conjunction which is generated by CONJ and eighth part of speech is interjection which is generated by INT. उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज ग्रामर? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. किसी भी लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं. अब हम देखेंगे कि वर्ड बाय वर्ड जो हमने क्वेश्चन में लिखा या आंसर में लिखा वो हर वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है. लाइकवाइज वो वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है. तो पहले हम देखते हैं व्हाट जो है वो क्या है. वो प्रोनाउन है ग्रामर में जिसकी माना क्या है? क्या. इज़ जिसकी माना होती है जो वर्ब है ग्रामर में. एंड ग्रामर जो है वो है नाउन है ग्रामर में. रूल्स नाउन है ग्रामर में. एंड इज अ कंजक्शन इन ग्रामर. regulations is noun denoted by symbol n and of is preposition prep denoted by symbol any is adjective in grammar adj and the language is noun in grammar. To call is verb as it is clear from to find. To call means it is verb. The second form of to call will be called and third form of call will be called. Fourth or ing form of call will be calling. So to call, called, calling. These are forms of verb. The next definition of grammar is structure of any language is called grammar. स्ट्रक्चर ग्रामर में क्या है? नाउन है. साइंस ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. किसी भी लैंग्वेज की साइंस को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं. साइंस ग्रामर में क्या है? नाउन है. फोर्थ जो डेफिनेशन है ग्रामर की वो है ग्रामर इज अ की ऑफ लॉक एंड लॉक इज लैंग्वेज. की ग्रामर में क्या है? नाउन है. एंड लॉक ग्रामर में क्या है? नाउन है. फिफ्थ डेफिनेशन ग्रामर की है द वर्ड ग्रामर इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्रामा विच मीन्स रूल्स ऑफ लैंग्वेज. वर्ड ग्रामर जो है वो लैटिन वर्ड ग्रामा से लिया गया है जिसकी माना है जबान के कवानीन. टू टेक वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म है टुक एंड थर्ड फॉर्म टेकन. फोर्थ फॉर्म इज टेकिंग. टू टेक मीन्स लेना which is a pronoun in English grammar. To mean means माने निकालना. The second form of to mean is meant meaning. Third form is meant and fourth form is meaning. The next definition of grammar is an art of putting correct words at their correct places according to their use. ग्रामर एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू हम करेक्ट वर्ड्स करेक्ट प्लेसेस पे यूज करते हैं. आर्ट ग्रामर में क्या है? नाउन है. टू पुट ग्रामर में क्या है? वर्ब है. पुट की सेकंड फॉर्म क्या है? पुट. एंड थर्ड फॉर्म भी सेम है पुट. एंड फोर्थ फॉर्म पुट की होगी पुटिंग. करेक्ट ग्रामर में एडजेक्टिव है अकॉर्डिंग टू हिज प्रीपोजिशन इन ग्रामर. यूज इज नाउन इन ग्रामर. द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रामर इज द लॉ ऑफ लैंग्वेज which teach us to read, to write and to speak in a correct way. ग्रामर एक ऐसा लैंग्वेज का कानून है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे सही तरीके से पढ़ें, बोलें और लिखें. ला ग्रामर में क्या है? नाउन है. टू टीच वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है टॉट एंड थर्ड फॉर्म है टॉट एंड फोर्थ फॉर्म है टीचिंग. अस ग्रामर में प्रोनाउन है. टू रीड वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है रेड एंड थर्ड फॉर्म है रेड एंड फोर्थ फॉर्म है रीडिंग. टू राइट जिसकी मीनिंग है लिखना. ये भी एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है रोट एंड जिसकी थर्ड फॉर्म है रिटन एंड फोर्थ फॉर्म है राइटिंग. टू स्पीक जो एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन एंड फोर्थ फॉर्म इज स्पीकिंग. अस इज प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर. टू रीड इज अ वर्ब. सेकंड फॉर्म ऑफ रीड इज read. Third form of read is read and fourth form is reading.
टू राइट मीन्स लिखना, जो एक वर्ब है। सेकंड फॉर्म इसकी होगी रोट, एंड थर्ड फॉर्म इसकी होगी रिटन, फोर्थ फॉर्म होगी राइटिंग। टू स्पीक मीन्स बोलना, वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्पोक, और थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन, एंड फोर्थ फॉर्म होगी स्पीकिंग। एंड कंजक्शन है इंग्लिश ग्रामर में, और वे जो है इंग्लिश ग्रामर में क्या है, नाउन है। For such upcoming videos, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.